व्हाट्स अप बॉयज, वेलकम बैक टू अनदर लाइव स्ट्रीम। एक बार फिर से सभी का स्वागत है एक और नई लाइव स्ट्रीम में। और पिछले एक या लगभग एक नहीं, कल परसों 2 दिनों से मैं स्ट्रीम नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। फिर कल मैं डॉक्टर के गया था तो उसके लिए मैंने पोस्ट भी बनाई थी उसमें, क्या नाम से, अपना जनरल में डिस्कॉर्ड के में। बट काफ़ी लोगों को पता नहीं चल पाया। और इसी बीच में मैंने काफ़ी सारे स्ट्रीम में चेंजेस भी करे हैं, मतलब सेटअप में देखो तो उन लोग को वैसे दिख तो रहा नहीं होगा, पर ये टेबल जो है थोड़ी सी इस तरफ आगे हुई है और इस तरफ भी खिसकी है। और जो लैपटॉप यहाँ पे रहता था जिस पे मैं चैट पढ़ता था, वो लैपटॉप इधर आ गया है। और बस यही है, बाकी कैमरा उधर ही की उधर है। तो यही चेंजेस हुए हैं और तो कुछ खास हुआ नहीं। 2 दिन से कहाँ था। तो सीरियस कैसा ब्रो? वेलकम बैक। यार एक बात बताना, वो सीरियस की जो मेरी आवाज़ है इसमें डिले हो रहा है क्या? जैसे मान ले कुछ देर बाद पहुंच रही है, मेरा लिपसिंग अलग दिख रही है स्ट्रीम में, क्योंकि मैंने लास्ट स्ट्रीम चेक करी थी उसमें ऐसा ही था। और सुना कैसा है, क्या हाल है भाई के? नहीं है ऐसा कुछ भी? नाइस। हेलो जिप्पो टीवी, क्या कर रहे हो? आजा खेल ट्रेनिंग में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। करो, मैं अभी ट्रेन, ठीक है। मेरा हो गया तो आजा। मैं तो घुसा हूँ। चूतिया मत बना। सच्ची में? 6 बजे से क्या कर रहा था वो? तेरे को पता नहीं क्या कर रहा था? ना। तेरे सामने तो है सब कुछ। कितना टाइम लगेगा तुझे ट्रेनिंग में? 10 मिनट तो दे। 10 मिनट बहुत होता है। तो एक गेम खेल ले फिर, और क्या बोलूं। जरूरी है ट्रेनिंग करना। यार देखिए, गेम क्रैश क्यों हो रहा है जिप्पो मेरा? तुम फॉर्मेट करो अपना पीसी। कल भी हो रहा था। हर गेम क्रैश हो रहा है। कल भी सिर्फ PUBG नहीं। कुछ क्या अपडेट सिर्फ आई है PUBG हो इनकी? रहा है? सिर्फ पबजी यार। अपडेट तो क्या है, देखते हैं क्या है। गुड मॉर्निंग पेशवर, अपडेट तो क्या हाल बहुत है? पहले आया था। हाउ आर यू ब्रो? मेरा तो 6 बजे अपडेट हो गया था गेम। हाँ तो मैंने अब किया है ना। पता नहीं मेरा अब क्यों आया है, क्योंकि मैंने गेम तो पहले भी खोल रखा था, तब नहीं आया। पर उसके लिए क्रैश नहीं होगा। सब पेसमैन ब्रो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। यार ये पबजी खुल जाए तो खेल लें थोड़ा सा, खुल के नहीं दे रहा। मस्त, तू बता। मैं भी मस्त हूँ, एकदम बढ़िया। बट थोड़ा अभी तबीयत खराब थी तो थोड़ा डाउन डाउन सा ही हूँ इस वजह से। फॉर्मेट मत कर, क्लियर कर, स्ट्रीम की वजह से हो रहा है शायद। हाँ पता नहीं क्यों हो रहा है कल ये तो स्ट्रीम मुझे थोड़ी कुछ कर रहा आइडिया है। नहीं पता। कल भी हुआ था क्योंकि कल तब मैं स्ट्रीम नहीं कर रहा था ना रात को, तब भी हो रहा था। कल डॉक्टर के गया था, थोड़ी सी तो दवाई ववाई खाई, रात को रेस्ट किया, तो अभी काफ़ी ठीक फील कर रहा हूँ। सुबह 6 बजे उठा था, जल्दी उठा था आज। उठा तो मैं कल भी जल्दी था, बट कल तबीयत ख़राब थी, फिर डॉक्टर के जाने के लिए उठा था कल, क्योंकि अपॉइंटमेंट था सुबह का 11 बजे का, 10 बजे का, और वो भी बहुत दूर है दिल्ली में, मतलब ऑपोजिट साइड पे था दिल्ली के, इसलिए फिर वहाँ गया। तो अभी थोड़ा ठीक है, मस्त है अभी। अखिल आचर और सब ब्रो, कैसा है अखिल? वेलकम बैक टू द लाइव स्ट्रीम ब्रो, वेलकम बैक। और ये गाइस एक बात बताना, ये जो मैं आवाज़ बोल रहा हूँ ये मेरे लिप्स मतलब उससे ऑफ तो नहीं है, मतलब सिंक है ना पूरी प्रॉपर, या ऐसा डिले है वॉइस में, कुछ ऐसा हो तो बता देना। मुझे लगता है वो सेटिंग्स तूने किया था ना FPS के लिए, उसके लिए हो रहा है ये।
पर यार उन दिनों तो हुआ नहीं था जिस दिन करी थी ना, जब करी थी तब नहीं हुआ, अब हो रहा है, तो देखते हैं। कहाँ था 3 दिन से? 3 दिन नहीं, तीसरा दिन तो आज है। यार देख फिर से क्रैश मत होइयो, फिर से क्रैश, फिर से क्रैश हो गया भाई। तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसे तो खेल ही नहीं पाएंगे, ऐसे क्रैश होता रहा तो। एक सेकंड में देखता हूँ कौन सी ऐसी सेटिंग थी जो जिसकी वजह से क्रैश हो रहा है, चेंज कर सकता हूँ मैं। और सुनाओ गाइस। शुभम भाई मैंने एक पोस्ट भी बनाई थी, कल ही बनाई थी, पर हाँ डॉक्टर के गया था, थोड़ा सा बीमार था पिछले 2 दिन से। शायद लॉन्च ऑप्शन की वजह से तो नहीं है, कुछ गलत लॉन्च ऑप्शन डाल दिया हो मैंने। एक सेटिंग थी, एक बंदे ने, मैंने एक बंदे की वीडियो देखी थी एफपीएस बढ़ाने के लिए, तो उसमें एक चीज़ थी, उसने बोला था कि अगर क्रैश हो रहा हो तो इसको वैसे कर देना। तो अब मैं वो देखना चाहता हूँ कि कैसे कर देना बोला था उसने। मेरे को जस्ट एक सेकंड देना। हाँ पबजी फेस बूस्ट, मेरे को उसकी वीडियो थोड़ी सी देखनी पड़ेगी आगे आगे What is करके। going on, guys? To bring you guys the अबे शायद से विंडोज ठीक है, ओके। क्या हो गया था? हाँ यार वही मौसम की वजह से। देखो ये क्रैश अभी भी हो रहा है, तो मैं एक बार इसको ठीक करके आया, वो जो एक सेटिंग थी ना उसको रिवर्ट करके आ रहा हूँ वापस, ठीक है। पर तुझे ध्यान है क्या क्या सेटिंग्स था? हाँ देख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ध्यान है। actually very simple and easy. It's currently is up over to the right hand side folder and override the high DPI scaling behavior आईडी पे ऐसे नहीं हो रहा। to the left hand side to you wish to do. If you double click on PUBG to High correspond with the priority. configs in which we've installed. Now before we go to FPS, so it's best that you click on the settings graphics alongside giving you a slight competitive the Here right is- hand side of the screen. That makes it very simple and easy so you can actually इस go बंदे ने एक top चीज and बोली zero. थी So कि kicking अगर things off, ऐसा what हो we're रहा हो going to do is क्रैश get तो into the bottom left hand side. ठीक करने के लिए Side, वो and you चीज should then ढूंढ be रहा seeing हूँ। the ultimate performance. You can then navigate out of all of the folders within inside of it until you're back to the starting folders. Just काश like मिल so. जाए। Simply look at the top of my screen, take yourself over to the right. Data of GPU priority. Do is simply double click on and just dragging the slider all the way up the video. There's clicking on your desktop and either open drop down menu once it's editable and navigating down to 0x. The number is set changes in the top within inside of it. It's completely cleaner अभी program. तक तो दिखी नहीं वो inside of सेटिंग। it. So to open the program, simply go ahead and double click and select yes. If the program doesn't open up with inside of your desktop, simply double to 1024. What we're then going to be doing is going down to and free memory is lower than box found with inside of here, so the second box. शायद ये वाली And थी। what we're going to be doing is setting this value with inside of here to half of your total system. So whichever the number is found with inside 96. Also going over to the right hand point 50, just like so. Delete all the rest of the values off the end of it, so it just looks very similar to that. We're then going to go down to the memory polling rate. With inside of this drop down menu, what you're simply going to be doing is you're going to be setting a higher value for the better spec system you have. So if you guys running on lower end systems, हाँ भाई नंबर 10 से ऊपर भी चले गए थे, मेरे को अच्छे से ध्यान है अखिल, 500 at max. So कैसा बोल सकता I हूँ। also like checking the बट यार वो options PUBG मोबाइल था, of the program, and it's one of the most important running and everything. Guide to PUBG with inside. तो PUBG मोबाइल का क्या करना भाई, ये ठीक हो जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बे मतलब। No, like all the files from preference. Power settings are set to number 4. साला बच्चे क्या किया है मैंने ऐसा, PUBG मेरा क्रैश हो रहा है, And then you're gonna टेम्प डिलीट मारे थे, यही सब तो किया था। description this malloc setting, and you're gonna go back to your game. कुछ खास तो ऐसा चेंज किया भी नहीं था। इस बंदे ने एक चीज बोली थी कि अगर ये तुम्हारा क्रैश हो रहा हो ना तो ये कर लेना,
वो चीज़ ढूंढ रहा हूँ मैं folder. क्योंकि मेरा क्रैश हो रहा है. Directory inside Battlegrounds. Press base game as this files tab, and then hit. What you're doing is right clicking on exec PUBG, disable full screen optimizations. Here, press OK. पर परसों तरसों तो नहीं हो रहा Go था. ahead and do is actually exit out of the game folder. मतलब अभी बीमार पड़ा था उससे पहले. Piggybacking off of that step. हाँ शायद नंबर 8 मेरे को ध्यान नहीं पर काफ़ी अच्छी रैंक आ गई थी. Type in reg edit just like this. Navigate within the folder. I'm going to click on one of these folders will be highlighted. Simply go over to the highlighted folder, right click and गाना delete बता. the folder. It'll ask you if you wish to do this. Go ahead and press yes. Once it's been deleted, you can exit out of the registry editor as the optimization has been completed. Finishing up with the application fixes, we can then once again go inside of the FPS increase pack provided, and this FPS increase pack pro क्या बोल रहा है? Apex high priority best results. and then press OK, and that optimization tweaked and applied optimizations to the application itself. Last but not least, एक सेकंड मैं ना optimization यार इसको म्यूट भी तो नहीं कर सकता तुम्हारे लिए. to finalize the game and set up our in-game. Make sure that what you do is you go inside of the in-game settings folder, description, issues, and best performance for to match your system spec. All of the in-game settings we're going to be setting up with inside of our game. These will be the best options to set for your system spec, allowing you guys the best visual fidelity, the best graphics, the game settings you're going to be into the game. What we'll do is we'll actually navigate down into Steam and we'll boot into the game. Now, when these settings, we set this to game in tab to the right hand side. So you can simply look at the right, making sure they क्या सेटिंग थी जो तूने क्या करवाई थी क्या थी? and we can then go ahead and exit out of the game. To further optimize navigating to any of the options available, click on the power up you found within inside of गेम को भी फीवर आया यार. गेम स्टार्ट नहीं हो रहा ब्रो. मतलब स्टार्ट तो हो रहा है क्रैश हो जा रहा है Windows 10. और पता नहीं चल पा रहा क्यों हो रहा है. What we're then going to be doing is navigating all the way to the right hand side. तो जो मैंने कुछ चेंजेस किए थे अभी लगभग हफ्ता होने वाला है अब तो उसी को मैं वापस रिवर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ. Piggyback, press enter, and then press the comment. Reason you do find your way to the directory. Off, we're going to scroll back on Windows. I'm going to be setting the value differently depending on your system specs. So if you guys running on ultra low end, or medium end systems, you want to set the value data to 1. For any of you guys running on higher end, medium end systems, all the way up to high end or ultra high end brand new gaming PCs, set the value data to 0. Once you guys have got that set to match your system spec, press OK. We can then double click on क्रैश वाली बात बोलेगा ना वो वाली चीज़ करनी है हमको. changing for priority and double clicking. Set यहाँ the पे value क्रैश बोलेगा. to 8 and press OK. Then navigating down to priority 6 and pressing OK. Then navigating down to scheduling and then doing the exact same thing. Do is actually exit out of the registry alongside games inside of Windows for the best and most optimal performance. And last but not least, to finish off all of the power mode options, what we can now go up for quick C. Go ahead and select quick sleep to update the program. 4 different तो बहनचोद समझ में नहीं आ रहा. and selecting the going over to frequency scaling index, and again going inside of optimizations and make sure that you also double which is sync and refresh, going over to the getting down to 0x0004 PS frame rate limiter, control delay flip by flip. Then been set, apply those changes in कल स्ट्रीम पे क्रैश क्यों हो रहा है? इससे पहले क्यों नहीं हुआ? you do take yourself to कल रात को हुआ था बस उससे पहले नहीं हुआ. right click on the power options and change back guys now to the intelligent start beat monitor खासी बेमतलब माच हो. to match our system specs. So to start off, what we're going to be doing is taking ourselves over 1024. What we're then going to be doing is going down to and free memory is lower than box found with system whatever the number with 8196. So going over to 0. We're then going to go down to the memory polling rate you have. So if you guys running on lower end systems, I'd recommend going with either 1000 or 2000, but I recommend sticking with a value of 500 at max. So once you've got that all set up, we can take ourselves up to the top to purge standby list, and then down to the bottom right hand side to select start. I also like checking the options in the bottom left hand side to ensure that the program opens up automatically on system boot. It's opened up and you've got it all running and everything, just go ahead and minimize the program and then it should inside of ओके यार ये तो बोल ही नहीं रहा कि क्रैश हो तो ये कर लो वो कर लो. If you enjoy videos like this, please do consider subscribing to the channel and pressing the bell notifications button. Come on. Once you guys have downloaded the file possible to ensure that we have Windows or A. For you guys needing to go through later on, but what we're going to be will help it easier for you to recommend a competitive and install the app data game user setting percent just like so up directory and key set. We're simply then going to go ahead and do is drag the config found over here on the right hand side. Now successfully installed our app into the config. This is actually very simple and easy to do. Keep the folder open on the right hand side, then take yourself down into Steam. But for the purpose of Steam ready properties, use the local
and to use BPM overlay and also forcing this off as well. Once you guys are done inside of there, take yourself up to the local inside of the TSL game folder. So again, take yourself over to the right hand side folder. Electric Claw, what's up bro? Welcome to the live stream. इलेक्ट्रिक भाई थोड़ा ना अभी गेम मेरा क्रैश हो रहा है तो मैं उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ. शायद 5 मिनट लगेंगे. Anyways, welcome. Head inside of the TSL game folder once again, this time so and navigating down to property, change high DPI, supply and OK. And off of that step, out of the so the left side of it, I'm going to click on one of these randomly highlighted. Finish the optimizer. With inside of here, double clicking on any of these keys will defaultly set the value priority mode with inside of Windows automatically every time the game is booted. But for 99% of you watching this video, you'll find the best option has been is to go with PUBG high priority and double click. Select yes once again and then press config files along. We can go ahead and do configs in which we've installed. Now before we go ahead and actually boot into the game, make sure that you take yourself into the FPS increase pack once again, and once again go inside of the configs folder. इसकी comments में भी किसी ने नहीं डाला. Settings folder in which we saw earlier on. ये मेरा crash हो रहा है. You'll click on the in-game settings that best match your system description or what you're looking for. For me, I'm going to be going with the high-end config as this offers many FPS optimizations and best performs for high-end systems and offers extremely good FPS. So it's best that you click on the settings that best match your system spec for the best results. So I'm going to go ahead and double click on high end. With inside of here, you'll be given a notepad which lists all of the in-game settings we're going to be setting up with inside of our game. These will be the best options to set for your system spec, allowing you guys the best visual fidelity, the best graphics, alongside giving you a slight competitive edge and the very best performance possible. So once you guys have got the notepad open of the game settings you're going to be using, what we'll do is we'll actually navigate down into Steam and we'll boot into the game. Now once you guys have booted into the game, take yourself Then create again it create new settings tab and then start off by going over and set the which is very that make it inside of the screen. Love from Dwarka mode, what's up bro? Epic killer क्या हाल है? Setting that option, fix options, optimization with inside of here. अगर ये इससे ठीक नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूँगा? कैसे ठीक होगा ये? Hello. Yes. And if you bottleneck your system, this is a good setting that you want to have on because it puts more pressure onto the CPU. Alright, so for this last part, new, then I would say with it in the lobby, say use the GPU related. So once this is open, threaded optimization is set to on. Some of the GPU related computing tasks onto the CPU. Peaceful sound आ रहा है. If you have a more powerful CPU but a very आना slow तो नहीं graphics चाहिए. card, or well, not very slow, but if your GPU bottlenecks your system, नहीं this कहाँ is रहा a है? good setting that you want to have on because it puts more pressure onto. Alright, so for this last part, इस वीडियो में तो है नहीं. तो मैंने 2-3 वीडियो देखी थी उस दिन. तो उन्हीं को मैं दोबारा से देखने की कोशिश कर रहा हूँ. Make sure you change temp. ड्राइवर सब ने अप टू डेट है ये. अच्छी खासी बेमतलब है. User currently can update that for this matches your system description or how you wish your game to be set up. For most people, I'd recommend going with the recommended. अब ओके पहले भी ओके रहा होगा. पहले भी कोई दिक्कत नहीं. Tweaks alongside disabling some things which will help it easier for you to play and spot people as well, whilst keeping the game a good visual balance. So for me, I'm going to be going ahead with the recommended competitive config, and with inside of there, you'll then be met with an app data config and game directory config. So to start off, we'll go ahead and install the app data config. App data percent just like so and press enter. Speed double कर देता हूँ. Inside of this folder, the roaming folder will then open up. Simply take yourself up to the top directory and click where it says app data. Then go ahead and proceed to go inside the local folder. Then scroll all the way down to the T section. You're going to be looking for TSL game just like so. Game directory and replace the file with inside of this destination. Once you guys have done that, we've now successfully installed you're using. Then this time go inside of the game directory config and double click. To install these two configs, it's actually very simple and easy to do. Keep the backgrounds just like so. Over and enable Steam overlay. Unchecking use desktop theater, then going down to the Steam input per game setting, forcing this to off, and also going down to use BP files. Your game directory will then open up. At this point, we're going to go inside of the TSL game folder, go inside the config. Okay. This is the location we're going to install our customized configs. So again, take yourself over to the right hand side folder, highlight both of the configs, drag them into the game folder, and Steam once again, and go to browse local files once again. Inside of here, this
game folder once again, this time going to binaries, Win64, and what we're going to be doing is right clicking on exec PUBG, just like so, and navigating down to properties. With inside of here, go to compatibility, check the box for disable full screen optimizations, go down to change high DPI settings, and override the high DPI scaling behavior performed by found down here. Press OK, press apply, and OK. We're then going to repeat that step for this folder as all of those is the full screen games with inside of the Windows registry. So to do this, what we'll do is navigate into the bottom left hand side and type in regedit just like so. Once you've got that typed out, press enter. Then go ahead and press yes to open up the program. At this point, what we're going to be doing is navigating to the left hand side to hkey current user. Go inside of that folder, then navigating down to the system folder. Double click on system, double click on game config store, then go inside of children. With inside of here, what you're then going to go ahead and do is press Control and F on your keyboard to find. And what we're going to be doing is searching for TSL game just like so and hit find next. At this point, you'll then be given a folder. I'm going to click on one of these randomly as I've already removed my folder, so it won't be able to find it. But what will happen is one of these folders will be highlighted. Simply go over to the highlighted folder, right click and delete the folder. It'll ask you if you wish to do this. Go ahead and press yes. Once it's been deleted, you can exit out of the registry editor as that optimization has been completed. Finishing up with the application fixes, we can then once again go inside of the FPS increase pack provided, and this time go inside of the optimizations folder. Navigate inside of the PUBG process priority folder, and you'll be met with 3 keys. With inside of here, double clicking on any of these keys will default. हेलो अंकित, हाँ बोल। ठीक हुआ तेरा? अबे नहीं यार, ये पता नहीं बहन। Set the value with inside of Windows whenever it boots. For instance, if you double click on PUBG high priority, the game will boot in high priority mode with inside of Windows. अच्छा, ये प्रायोरिटी वाला सीन था। दिख गया। For 99% of you watching this video, you क्या find the best option priority? here is to go with PUBG high priority and double click. Select yes once again, and then Crash हो रहा है ना game? optimization has been completed. Assuming that we've तो now priority installed से our वाला customized scene and मतलब? optimized config रुक जा, files, करने and दे also tweaked पहले and इसे। applied optimizations to the application itself. Last but not least, for the game specific optimizations, what we can go ahead and do is actually boot into the completed. Percent of you watching this video, you'll find the best option here is to go with PUBG high priority and double click. Select yes once again and then press OK, and that optimization has been completed. Assuming we've now installed our customized and optimized config files alongside tweaked and applied optimizations to the application itself. Last but not least, for the game specific optimizations, what we can go ahead and do is actually boot into the game to finalize the game and set up our in-game settings correctly to correspond with the configs in which we've installed. Now before we go ahead and actually boot into the game, make sure that you take yourself into the FPS increase pack once again, and once again go inside of the configs folder. This time what you'll do is you'll go inside of the in-game settings folder in which we saw earlier on, and again with inside of here you'll click on the in-game settings that best match your system description or what you're looking for. For systems, and with inside of here you'll be given a notepad which lists all of the अब शायद सही हो गया होना चाहिए, एक बार ट्राई करके देखते हैं। बे मतलब कितना सारा टाइम खा गया ये गेम। अगर अभी भी ठीक नहीं होना तो मेरे को रीइंस्टॉल मारना पड़ेगा और कुछ नहीं होगा। खुल जा। जिप्पो बोलो। यार वो प्रायोरिटी कैसे सेट करते थे? OBS में होता था वो तो। भाई अब तो खुल भी नहीं रहा, खुलते ही क्रैश मार रहा है। एक बंदे ने नीचे कमेंट में लिख रखा था कि मेरा भी क्रैश हो रहा था, मैंने सीधा विंडो दोबारा डाली और गेम दोबारा डाला, ठीक हो गया। मैंने कहा भाई एक चीज देखा है अंकित, अभी क्या? मैच थोड़ा लेट मिल रहा है कल से, पता नहीं क्यों। सोलो दिखा रहा है 5 सेकंड पर टाइम ले रहा है और घुसने के बाद ही टाइमिंग शुरू नहीं हो रहा है, समझ रहे? जैसे ऐसा रात क्या? को रात के टाइम नहीं होता ना, हम्म। वैसे हो रहा है अभी। Always on top, hide when minimize, refresh now, update speed, नॉर्मल ये रहा। मॉनिटर पे चप्पल मार, सब ठीक हो जाएगा। काश हो जाता। मॉनिटर ठीक नहीं रहेगा, बाकी तो शायद ठीक हो भी जाए। पर अगर मॉनिटर का बात हो ही नहीं रहा है, मॉनिटर में चप्पल मार के क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा। तो मॉनिटर में भी दिक्कत होना चाहिए ना उसके लिए। हाँ भैया, गान फट कैसे सही होगा? खुल के ही नहीं दे रहा। अगर अब मैं यूँ बोल रहा था, अगर अब क्रैश हुआ ना, इनमें तो हो भी गया।
रिप्पो भैया ठीक करवा दो यार, गांड फट गई। ये सालों की ना वीडियोस कभी फॉलो नहीं करनी चाहिए, वहाँ चोद देते गेम की। दोबारा इंस्टॉल करूँ क्या जिप्पो? नो पबजी? नो, तो फिर क्या करूँ? थोड़ा देख, ठीक हो जाएगा। भाई पिछली इतनी देर से मैं देख ही रहा हूँ, अभी तक अगर इंस्टॉल किया होता ना तो शायद कुछ हो कितना गया। टाइम लगेगा इंस्टॉल करने में, रीइंस्टॉल करने में? थोड़ा तो लगे, कितना थोड़ा मतलब? 30 मिनट, 30-40 मिनट। बहुत होता है भाई। अच्छा, रिस्टार्ट करके आना, देखना ठीक हो जाएगा तो। पीसी रिस्टार्ट? हाँ, पीसी रिस्टार्ट करके आऊँ क्या? हाँ, हाँ। चल देखता हूँ, एक बार ट्राई किया जा सकता है। गाइस एक बार ही ना मैं पीसी रिस्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ और फटाफट से आकर के स्ट्रीम को कंटिन्यू करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आके स्ट्रीम कंटिन्यू करूँगा, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे को पबजी दोबारा से डालना पड़ेगा। तो फिर तो मैं 40 मिनट बाद ही स्ट्रीम स्टार्ट करूँगा, या फिर एक बार ही गेम ही ऑन करके देख लूँगा पहले और फिर स्ट्रीम स्टार्ट कर दूँगा। पर यार 1 मिनट का टाइम होता है, 1 मिनट सब कुछ करना पड़ेगा। तो मैं आता हूँ एक बार फटाफट से रिस्टार्ट मार, इसे अभी आया, बाय बाय।